Okay, so once you have this understanding that any possible value of load impedance, graphically we have an infinite region or infinite area. Now, load can also be represented in terms of its reflection coefficient. This is something which I discussed before, that reflection coefficient, which is equal to ZL minus Z naught divided by ZL plus Z naught. So information about load can also be given to you in terms of reflection coefficient. And this is what Peter Smith explored, that if load is represented graphically in terms of impedance, we have an infinite region. But if the same load can be represented in terms of its reflection coefficient, then we know that the region in which the possible values of reflection coefficient can lie is a finite region. If you remember in my previous session, I mentioned that all possible values of reflection coefficient will lie within the unit circle. So now the region in which reflection coefficient will lie, it is a finite region. So from infinite region, we can map into a finite region. So this is one important point that you can get from this discussion, that it is more convenient for us to represent or to specify load in terms of its reflection coefficient, because if information is given to you, so now what I'm going to write is if load information is specified in terms of its reflection coefficient, then all possible values will lie in a finite region, that is unit circle. This is something which I discussed in previous session. Okay. Okay. So with this understanding, let me write down or derive some equations. So the first thing is this original equation, which is representing the actual load in terms of its reflection coefficient. And if you remember in my previous session, I mentioned that Smith chart is used for normalized quantities. So the first thing I need to do is normalize this load. Okay. So this is the equation that we have for the actual load, but I want to transform it for the normalized load. So what I will do is, in order to normalize this ZL, I will divide the numerator as well as denominator by Z naught. Okay. So what you need to do is, let me write it down. Normalize the load impedance. So what you need to do is divide numerator as well as denominator by Z naught. So what you will get, reflection coefficient on the left hand side. So ZL divided by Z naught, if you remember, I represented this thing that if ZL is divided by Z naught, you will get something, and I will call that as ZL dash. So you get ZL dash minus Z naught divided by Z naught, 1. And in the denominator, you get ZL dash plus 1. Okay. So from this equation, you get this thing, which is now in terms of normalized load impedance. So let me write it over here as well. What is ZL dash? It is normalized load impedance.
Let me rearrange this equation for ZL dash. Okay, so you can easily rearrange this equation. I want ZL dash on one side. So what you need to do is rearranging it for ZL dash. We get, so ZL dash is equal to 1 plus reflection coefficient divided by 1 minus reflection coefficient. So from this equation, gamma equal to ZL minus dash divided by ZL plus Z dash. If you rearrange it for ZL dash, you will get this thing. Now this reflection coefficient that I'm using over here, we know that this reflection coefficient is a complex quantity. It has a magnitude, it has a phase, or if you want to represent it in terms of a rectangular form, you will say it has some real part represented by gamma r, and it has some imaginary part represented by gamma I. So let me use this form, that is a rectangular form, in terms of its real and imaginary part. So this is the real part of reflection coefficient, and this is the imaginary part of reflection coefficient. Now, generally, this ZL dash, of course, I'm assuming that this ZL is some kind of a complex load, so it has real and imaginary part. So when I divide it by this Z naught is a real number. So this ZL dash is still a complex quantity. It will also have some real part and imaginary part. Okay. So on the left hand side, I can say that this ZL dash, it has some real part. Let's call it small r, RL dash, and it has some imaginary part. Let's call it small xl dash, equal to 1 plus, and let me use this form. So this gamma is equal to gamma r plus j gamma I divided by 1 minus gamma r minus j gamma I. To make sure that you are following the symbol notation, so this ZL dash, this ZL, this capital ZL is a complex load, so it has real part, capital R, L. It has imaginary part represented by capital XL. So when you divide it by Z naught, so when you divide it by Z naught, so this is divided by Z naught, this is also divided by Z naught, this is also divided by Z naught. So you get ZL dash, RL divided by ZL, you get RL dash, and XL divided by XZ naught, you get XL dash. So this is what I have used over here. Okay. Now we are interested in finding out that if RL plus JXL dash is equal to this thing, so I'm interested in finding out what is RL dash. So what is the real part of this expression? And if I want to find out XL dash, so XL dash will be equal to imaginary part of this expression. So from your basic mathematics, you know that if you are given an expression, complex expression, which is the ratio of two complex number, and if you want to separate the real part and imaginary part, we do the rationalization. So I'm not going into that much detail. What you need to do is you need to uh, divide and multiply with the complex conjugate of this number. Okay, so you can easily do this thing. So I'm going to so what do we need to do is, so multiply it by 1 minus gamma r plus j gamma I, as well as divide it by 1 minus gamma r plus j gamma I. What I've done is I have taken the complex conjugate of this denominator and then multiply it and divide it. Okay. So this process
will help us to separate the real imaginary part. So I'm not going into this detail because this is just a straightforward manner. It has nothing to do with the concepts of microwave engineering. This is pure mathematics, and you people can easily do that. All you need to do is to multiply, divide it, and you will be able to split the real imaginary part. So what I'm going to do is, so you need to get the real and imaginary parts of this expression. So whatever is real part you get from this, whatever real part you will get, that must be equal to RL dash, and whatever imaginary part you get, that must be equal to XL dash. Okay, so I'm going to equate real part of this expression to RL dash and imaginary part to XL dash. So you will get that RL dash, the real part, is equal to 1 minus gamma R square minus gamma I square divided by 1 minus gamma R whole square plus gamma I square. And the imaginary part, XL dash, it will be equal to 2 times gamma I divided by 1 minus gamma R whole square plus gamma I square. So this is the real part that you will get after solving this. So I have calculated the real part, which was this thing, and I'll equate it to the real part on the left hand side, RL dash, and this is the imaginary part that you will get after solving this, and the imaginary part has to be equal to the imaginary part on the left hand side, which is XL dash. Now, by looking at these two equations, so it is not possible for us to find out that what type of equations are these, but we can easily rearrange them. So these equations can be rearranged as. So let me write down the rearranged form, and then you will be able to understand that why I want to rearrange these equations. Okay. So the first equation, that is the which is relating RL dash. This equation can be represented like this: gamma R minus small RL dash divided by 1 plus RL dash whole square plus gamma I square equal to 1 divided by 1 plus RL dash whole square. And the second equation can be written as gamma R minus 1 whole square plus gamma I minus 1 over XL dash whole square equal to 1 over XL whole square. Let me call this equation A and this equation as B. If you look at these two equations,
which is actually this equation rearranged in this form and this equation rearranged in this form. The reason that I have represented these two equations in this form is because I want you to understand the nature of these two equations. If you look at these equations A and B, and if I ask you what type of equations are these? Have you ever come across equations like this? Anyone? Yes, a circle equation. Yes, these are circle equations. So what is, if I generally represent, if I want to represent in a general manner equation of circle, equation of circle in xy plane. So there is a circle in xy plane, and I want to represent it in a analytical form. So this is the equation that you might have studied in basic maths courses. So x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. So this is the general equation of circle that we are used to it. Okay. In this representation uh, of circle, what is a b and what is r? ए और बी क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा जी, और आर क्या चीज? ए बी सेंटर यस, पॉइंट्स है यस, और सो आर रेडियस। रेडियस, यस। सो जो ए और बी है ये इसका सेंटर शो कर रहा होगा कि एक्स वाई प्लेन में ये इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे, और जो आर है वो इसका रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन एक्स वाई प्लेन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हम कहें कि लेट्स से कि इक्वेशन सर्कल का सेंटर 0 0 पे है, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर। हम यहाँ से सेंटर कंसीडर करेंगे और फिर विद हेल्प ऑफ अ कंपास आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। सो ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये इसका सेंटर हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स इन एक्स वाई प्लेन सर्कल में भी समवेयर ओवर हियर है इस वक्त, तो इस वक्त इसका सेंटर ये है, तो इसका सेंटर होगा ए कॉमा बी, डिपेंड करता है, और ये इसका। Now, if you come back to the two equations, equation A and B, so as someone has correctly pointed out कि ये भी सर्कल की equations। डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास जो प्लेन है, जिस प्लेन में हमने सर्कल बनाने हैं, वो कौन सा प्लेन है? वो आपके पास गैमा प्लेन है। यू कैन सी यहाँ पे आपको गैमा आर नजर आ रहा है, यहाँ आपको गैमा आई नजर आ रहा है। सो नाउ अगर हमारे पास प्लेन हो, कौन सा प्लेन? गैमा प्लेन। और गैमा प्लेन में ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। जिस तरह एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। सो इन गैमा प्लेन ये आपको जो नजर आ रहा है ये आपको सर्कल नजर आ रहा है। इक्वेशन ए जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन है, बट द पॉइंट इज कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है और इस सर्कल का रेडियस कितना है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज इक्वेशन ए को अगर आप देखें, ये जो सर्कल की इक्वेशन है इन गैमा प्लेन, इसका सेंटर कहाँ पे है और इसका रेडियस कितना है? सर ये एक्स एक्सिस पे गामा एल बाय 1 प्लस गामा एल पे होगा। इक्वेशन ए का इक्वेशन ए विच इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल, एंड आई एम आस्किंग इसका सेंटर कहाँ पे है? आप क्या कह रहे हैं? सर सेंटर गामा आर गामा रियल एक्सिस के ऊपर होगा, और उसका वो जो ओरिजिन से गामा एल बाय 1 प्लस गामा एल से गामा एल दूर होगा। नहीं, मैं सिंपली इसका आंसर अगर आप कहें कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या करते हैं इसको, what I'm asking is equation A represent, तो मैं कह देता हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स कहता हूँ, क्योंकि ये एक सर्कल नहीं है बल्कि बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम
सेंटर कहाँ पे ले रहे हैं, रेडियस कहाँ. So equation A represent a family of circles. But the main point, before proceeding further, एक और important चीज है कि जो equation A है इसमें जो सर्कल हमारे पास बनेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर एल डैश पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, आर एल डैश क्या चीज था, if you go back, आर एल डैश इज द रियल पार्ट ऑफ द इम्पिडेंस, और इसको आप रेजिस्टिव पार्ट भी कह सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट मैं कहूंगा कि जो इक्वेशन ए है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ रेजिस्टिव सर्कल्स. ठीक है, क्योंकि जो सर्कल्स हैं इनका जो किस किस्म का सर्कल बनेगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इन सर्कल्स को हम रेजिस्टिव सर्कल्स कहेंगे. सो द पॉइंट इज, जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो सर्कल्स हैं इनका सेंटर कहाँ पे होगा और इनका रेडियस कहाँ पे होगा. सर सेंटर तो 0.5 और 0 पे होगा सर. 0.5 और 0 पे होगा, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं. सर और एल को अगर हम 1 सपोज कर ले. नहीं नहीं, सपोज तो नहीं कर रहा ना. इस वक्त तो मैंने कहीं भी कोई सपोजिशन नहीं की, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आर एल की कितनी वैल्यू है, एक्स एल की कितनी वैल्यू है. मैंने ये भी नहीं बताया कि जेड नॉट कितना है. मैं तो इस वक्त जनरलाइज फॉर्म में सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ. तो आप इस वक्त कुछ सपोजिशन नहीं कर सकते, आपने मुझे जनरल फॉर्म में बताना है कि सेंटर कहाँ होगा. जिस तरह इस केस में आप, जब मैं लिख रहा था कि ये जनरल इक्वेशन है, तो क्या मैंने बताया कि ए कितना है बी कितना है, मैंने तो कहा कि ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, इररिस्पेक्टिव के आर कितना है, इररिस्पेक्टिव ए कितना है, इररिस्पेक्टिव के बी कितना है. तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या कहेंगे कि इक्वेशन ए का सेंटर कहाँ पे है. रियल R एक्सिस पे. axis पे. रियल एक्सिस. नो, लेट मी राइट इट डाउन. यू विल से इसका सेंटर है किस जगह पे, आर एल डैश divided by 1 plus RL dash comma 0. ये इसका सेंटर पॉइंट होगा और इसका रेडियस कितना है, 1 divided by 1 plus RL. 1 divided by 1 plus RL dash से जो भी वैल्यू आएगी वो इसका रेडियस हो जाएगा. सो ये जो जो रेजिस्टिव सर्कल्स हमारे पास बनेंगे इस गैमा प्लेन में, इनका सेंटर जो होगा, जो ए की वैल्यू है, जो कि ऑफ कोर्स अगर हम एक्स वाई प्लेन के साथ रिलेट करें, ए का ताल्लुक एक्स एक्स के साथ है, वाई का ताल्लुक बी के साथ है, इन अ सिमिलर मैनर ये आप कह सकते हैं कि ये आपका ए है और यहाँ पे क्योंकि बी जीरो है तो आपके पास तो एक पॉइंट, तो यहाँ पे एक ऑब्वियस जो समवन हैज पॉइंटेड आउट कि ये जो सेंटर है, क्योंकि इसमें गेमा आई की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि जितने भी सर्कल है इनका सेंटर कहाँ पे होगा, इट हैज टू बी ऑन दिस प्लेन. जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी रेजिस्टिव सर्कल्स हैं, इन सब का सेंटर इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. ठीक हो गया. कहाँ पे होगा वो हमें कब पता चलेगा, जब हम आर एल डैश की वैल्यू हमें पता हो और इसका रेडियस कितना हो वो भी हम उस वक्त बताएंगे जब इसका आर एल डैश होगा. लेकिन एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो हमने दो इक्वेशंस डिराइव किए हैं जिसमें हमने लोड को, जो हमारा लोड था जेड एल को, उसको हमने गैमा प्लेन में शिफ्ट कर दिया है और अब गैमा प्लेन में हम इसको देख रहे हैं कि गैमा प्लेन में हमारे पास जो इम्पिडेंस का जो रेजिस्टिव पार्ट है उसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स बने. उन सर्कल्स को हम किस तरह आप देखेंगे, अब जो मैं इसको बनाने लगा हूँ. लेट्स कंसीडर, just 1 minute. Okay, so I was talking about equation A, and I have now specified that equation A is going to represent a circle, and we will end up with a number of circles. That is why I'm calling them family of circles. And because they are circles, what will be the center of that circle and what will be the radius of that circle, because it is dependent on the resistive part of the impedance. So that is why we are going to call them as resistive circles. Okay. So now let me draw one or two circles, and that will help you to understand
the some of the circles which I draw at the start of today's lecture. So let's consider that as an example, we are given information that the real part, that is RL dash, is equal to, let's say, 1. So there is some load, and after normalizing it, we found that the part of that is equal to 1. That is the normalized part is 1. So based on that, अगर हम इसको अब देखें कि इस वैल्यू के लिए जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ए है, इसमें अगर हम पुट करें, सो पहले तो सेंटर की बात करते हैं. इसका सेंटर कहाँ पे आ जाएगा? सो आर एल डैश इज 1 divided by 1 plus 1, so 1 plus 1 is 2, so 1 divided by 2 is 0.5. तो इसका इस पर्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा? 0.5, 0. सो लेट्स से कि ये आपके पास सेंटर, ये हमारा ओरिजिन है. सो लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास 0.5 है. सो आई विल बी समवेयर ओवर हियर, सो 0.5, 0. So this is going to be the center of our circle. और इसका रेडियस कितना होगा? सो रेडियस के लिए क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एल डैश, तो ऑफ कोर्स ये भी आपके पास 0.5 आ जाएगा. तो इस सर्कल का रेडियस भी 0.5. ठीक है. सो सेंटर हमने फाइंड कर लिया, 0.5, 0 हो गया, और जो रेडियस है वो हमारे पास हो गया 0.5 फॉर दिस एग्जांपल. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे आप इसको लेट्स से कि वी हैव अ कंपास, यहाँ पे मैं इसको सेंटर यहाँ रखूंगा, और ये भी 0.5 है, और लेट्स से कि ये भी 0.5 है. तो मैं इस तरह का एक सर्कल बना दूंगा. क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. ओके. नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं. एक्सट्रीम एग्जांपल इस सेंस में कि मैं इसको कह देता हूँ कि अगर हमारे पास सिचुएशन ये हो कि अगर आर एल डैश की वैल्यू 0, आर एल डैश की वैल्यू 0. ठीक है. ये एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. इस केस में क्या होगा? सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर कहाँ पे होगा? 0, 0. और Yes, sir. रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 1. 1 होगा. ठीक हो गया. सो आर एल डैश इक्वल टू 0 के लिए जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर है 0, 0 पे. उसके मतलब है कि यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, ये 0, 0, और इसका रेडियस कितना है? 1. ठीक है. तो मैंने इस वक्त पहले इसमें ये 0.5 लिया था, 1 था. इसका मतलब है कि यहाँ इसका रेडियस इतना होगा. सो विद हेल्प ऑफ योर कंपास अगर आप इसका ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट अ सर्कल व्हिच विल बी लाइक दिस. अगेन आई हैव ड्रॉन इट करेक्टली. मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ ताकि यहाँ पे 0.5 है और यहाँ तक 2 समवेयर. सो इस तरह का सर्कल होना चाहिए. ठीक. समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इसको टच होना चाहिए. सॉरी. Something like this. Okay. Now, this is something which you can try yourself. मैंने 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं. द पॉइंट जो आपको नजर आएगा वो ये होगा. मैं इसको जनरलाइज करने लगा हूँ. सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि आर एल डैश की वैल्यू जब 1 थी तो मेरे पास ये वाला सर्कल था. तो मैं इस सर्कल को अब एक इसको यहाँ पे जस्ट टू क्लेरिफाई कि ये सर्कल मैंने कौन सी वैल्यू के लिए बनाया है, जिसमें मैंने आर एल डैश की वैल्यू 1 सपोज की थी.
और ये जो बड़ा सर्कल मैंने इस वक्त बनाया है, ये मैंने कौन सी वैल्यू के लिए लिया है, जब मैंने अज्यूम किया कि आर एल डैश की वैल्यू अगर 0 हो तो ये होगा। सो ये जो एक ट्रेंड आपको एक नजर आएगा, जिसको आप फर्दर खुद भी देख लेंगे, और एक्चुअल स्मिथ चार्ट जो पहले मैंने बनाया था वो भी देख लेंगे, कि जब आर एल डैश की वैल्यू कम हो गई, 1 से 0 हो गई, तो सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा हो गया। कोर्स ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, रेडियस बढ़ गया। आर एल डैश की वैल्यू कम हो गई, रेजिस्टिव पार्ट कम हो गया, तो सर्कल का रेडियस बड़ा हो गया। और दूसरा, सर्कल का जो सेंटर है, छोटे सर्कल का सेंटर यहाँ पे था, और जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर जो है यहाँ पे। तो यू विल फाइंड आउट कि जब आर एल डैश की वैल्यू कम होगी, आर एल डैश की वैल्यू जब कम होगी, इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और जब आर एल की, ये तो एक वैल्यू है, मे बी फिर आप प्रैक्टिस कर लें, आप आर एल डैश की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। जब आप आर एल डैश की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इसका सर्कल, इसका रेडियस और भी कम हो जाएगा, और इसका जो सेंटर है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर आर एल डैश इक्वल टू 1 का सेंटर ये है, तो अगर आप आर एल डैश इक्वल टू 2 लेंगे तो उसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, उसका सेंटर भी मूव करेगा इस साइड पे, और उसका रेडियस भी कम होगा। तो अगर अब आप क्या करें, मैं एग्जांपल के तौर पर तो मैं ले लिया, आप ट्राई करें कि आर एल डैश की वैल्यू, लेट से मैंने तो दो एक्सट्रीम वैल्यू लिए, 0 लिया था, आप क्या फिर करें कि 0.2 ले लें, फिर आप 0.5 ले लें, फिर आप कुछ वैल्यूज जो हैं 2 से ज़्यादा भी ले लें। यू विल फाइंड आउट कि आपके पास इस तरह के सर्कल्स बन जाएंगे। मैं इसको बना लेता हूँ, एंड देन आई विल कम टू द मेन पॉइंट, जो शुरू में आज के लेक्चर के स्टार्ट में जब मैंने आपको कहा था कि स्मिथ चार्ट इस तरह का स्मिथ चार्ट होता है, उसमें मैंने कुछ रेड सर्कल्स बनाए थे, और मैंने भी एक क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट दीज रेड एंड ब्लू सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग, और ब्लू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग। तो अब आपको जो स्मिथ चार्ट के ऊपर ये जो इस तरह के सर्कल्स नजर आ रहे हैं, नाउ यू नो कि ये सर्कल्स कौन सी इक्वेशन से बने हैं। ये सारे के सारे सर्कल इस इक्वेशन से आप खुद भी बना सकते हैं, और इन सर्कल्स को फिर हम क्या नाम देंगे, स्मिथ चार्ट के ऊपर ये इस तरह के जो सर्कल्स आपको नजर आएंगे, इन सब को हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे कि ये कौन से सर्कल्स हैं, रेजिस्टिव सर्कल्स। ठीक है, रेजिस्टिव सर्कल्स। और जो भी सर्कल होगा, ये किसी खास, जिस तरह मैंने एग्जांपल के तौर पर तो सिर्फ दो ही सर्कल लिए, इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपके सामने बना दिए, तो अब आप कह सकते हैं कि ये वाला सर्कल आर एल डैश 0 के लिए है, और ये वाला जो सर्कल है ये आर एल डैश इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आर एल डैश इक्वल टू 1 है, ये सर्कल वो सर्कल है जो कि स्मिथ चार्ट के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, ये स्मिथ चार्ट का सेंटर है। ठीक हो गया, तो आर एल डैश इक्वल टू 1 वाला जो सर्कल है वो बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर, और ये छोटे सर्कल हैं, ये आर एल डैश इक्वल टू 1 से ज्यादा की तरफ जाएंगे। और आप अगर चेक कर लें, आप इसको, ये जो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने जो कहा था कि एक्सट्रीम हम कहाँ तक जा सकते हैं, आर एल डैश को मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, रेजिस्टेंस 0 से इन्फिनिटी तक जा सकती है। आर एल डैश इक्वल टू जब इन्फिनिटी आप करेंगे, तो अगर आप चेक कर लें, आपके पास इसका जो सेंटर है यहाँ पे, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, इसको अगर आप सॉल्व करें 0 हो जाएगा, तो इसका आपके पास सेंटर आपके पास 0 तरफ चला जाएगा, सॉरी 1 की तरफ चला जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ चला जाएगा, 1। ये कौन से केस के लिए मैं कह रहा हूँ, जब आर एल डैश कितना हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, सेंटर इसका ये हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर, इसका रेडियस 0 हो जाएगा, तो ये जो सर्कल है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट होगा। सो नाउ यू नो कि ये जो स्मिथ चार्ट के ऊपर आपको इस तरह की जो कंप्लीट सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये कौन से सर्कल्स हैं, ये रेजिस्टिव सर्कल्स हैं, एंड एवरी सर्कल इज फॉर one particular value of RL dash. Okay, so now this is resistive circles.
तो एक तो आपको स्मिथ चार्ट के ऊपर क्या नजर आएंगे, रेसिस्टिव सर्कल्स नजर आ जाएंगे, और मैंने अब इसका पूरा आपको मैथमेटिकल वो भी बता दिया कि ये कहाँ से है। नाउ कमिंग टू द इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन बी अगर आप देखें, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये जो सर्कल्स हैं यू कैन सी के इन सर्कल्स का रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्सएल डैश के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्सएल डैश। और एक्सएल डैश बेसिकली क्या चीज थी, इफ यू गो बैक, एक्सएल डैश क्या था, ये जेडएल डैश का इमेजिनरी पार्ट, जिसको आप रिएक्टिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इक्वेशन बी जो है ये भी फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हम कहेंगे कि इक्वेशन ई रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ रिएक्टिव सर्कल्स। सो इक्वेशन बी